this is the disposition of the currents, the fault currents, in fact, given on the various buses. Now, as we can see for ourselves, there are three buses here. Bus C, bus B, and bus A. C is the downstream bus, whereas A is the most upstream bus, and B is obviously intermediate. Upstream ka matlab hai something that is close to the source. This is the load current disposition. A typical value of the load current on bus C is 80 ampere. A typical value of load current on bus B is 160 ampere. And a typical value of load current on bus A is 200 ampere. Is that clear? Which is quite unusual. Typically, we would expect the different loads to be somewhat similar. But anyway, after that, if you look at this table, we have been given some data about the fault currents on the various buses. So for example, if I look at bus number C, which is the downstream bus, the fault current typically varies from 1000 to 1500 amperes. Corresponding figures for bus B are 2000 and 3000, and for bus A, these are 3500 and 4000. So if you look at minimum fault currents, look at this row. As one moves downstream, the fault level decreases. So bus A has the highest fault level, and bus C has the lowest fault level. This was something that we had seen in the last class as well, when we tried to design a protective system for such a system using DTOC relays. Here, obviously, we are using IDMT relays. Why are we using IDMT relays? I had basically explained the fact that because a DTOC relay has a very powerful, not a powerful, it has a very significant limitation that it has limited adaptability, limited flexibility. It basically has only two kinds of setting points. One is basically the time of operation, and then we have the current level. Beyond that, there is no flexibility. Say the time of operation does not depend upon the current level. On the other hand, the IDMT characteristics are hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, again, let me. Is this visible? Yes, sir. Visible. Hello. Okay. So मैं पूछ रहा था आपको what will be the level of this current here? Anyone? IRB. What should it be equal to under normal conditions? The current that is flowing in line section BC, Load current ILC. which is 80 amperes, है ना? And under normal conditions, what should be the peak value of this current IRA? 240. Just you, है ना? 160 plus 80, that is equal to 240 amperes. And therefore, when we have to remember that this is the current that is flowing in the line on the high voltage side, you can't connect the relay directly to the high voltage side. You have to basically connect a current transformer in between. Let us see. Current transformer is, first of all, we will have to decide a suitable turns ratio for the current transformer and all that. We had basically seen looked at the initial parts of that process in the last class. Let us continue with that discussion. So if I look at relay B, the maximum load current maximum load current, as I said in the last class, we typically take a margin of say 20% or 30% or 15%. In this example, this author has taken a margin of 25%. So if I look at the normal current 80 and I add 20% of that, I will get a figure of 100 amperes. Is that clear? And therefore, if I take a CT of 100:1 ratio, ठीक है?
and I will take a plug setting of 1, this relay will have a pickup value of 1 ampere. Let me explain this again. We know that this pickup value of the relay, but remember this is the pickup value referred to the primary side. On the high voltage side, it is lower bounded by this load current, which is 80 ampere, and it is upper bounded by the fault current on bus C, जैसे हमने देखा था. ठीक है. फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, we typically this fault current is quite large compared to the load current. So for example, look at the fault current. Even the smallest fault current on bus C is 1000 amperes, whereas even if you take the load current itself is only around 80 amperes, which is 8%. So the next step would be to take a suitable pickup value. We take a pickup value corresponding to, in this case, 25% overload. Is that clear? In other words, when the current becomes 100 amperes on the high voltage side, my relay should pick up. In order to do that, what I have done is I have taken a 100:1 CT. ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है. So when primary current is 100 ampere, secondary current is 1 ampere. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारे पास रिले है उसकी सेटिंग मैंने रखी हुई है 100% पे. उसका मतलब है I have put plug setting, which is also known as pickup value or threshold value. I have taken that to be 1 ampere. In other words, the minimum current that the relay requires for it to operate is 1 ampere, which corresponds to a high voltage side current of 100 amperes. Is that clear? We repeat the same process at relay A. Relay A on the high voltage side, the CT of relay sees a current of 240 amperes. If I take a margin of 25%, okay, so this is 240 plus 25% of 240, that is around 300 amperes. I will again take a CT ratio of 300:1, and the plug setting again has a value of 1 ampere. In other words, when the high voltage side current on this line section reaches 300 amperes, the CT ratio is 300:1, and therefore this current here, the current that is flowing into the relay, will be 1 ampere. If I take the plug setting equal to 1 ampere, this relay will start to operate. Is that clear? Okay. So that is one thing that I have already designed. I have chosen the value of the plug setting, that is basically the current setting. I still have to worry about the time multiplier settings, जो TMS होते हैं. जैसे last class में भी हमने देखा था, जब DTOC relay देख रहे थे, we have to choose the current level, the pickup level, which we have already done here, and then we have to choose the time of operation. How do we do that? ठीक है. So first of all, we have to, as we have seen, we will start with relay B because it is a downstream relay. It does not have to worry about any other relay. ठीक है? Because इसके बाद कोई relay नहीं है. We will want to ensure that this relay operates as fast as possible. Is that clear? Is that clear or not? So let us see. ठीक है? Let us look at relay B. ठीक है. सो रिले बी जो आपका है, इसको कौन सी फॉल्ट करंट नजर आती है? इट कैन सी अ फॉल्ट करंट इक्वल टू 1000 एम्पियर्स. It can see a fault current equal to 1500 amperes. It can see a fault current equal to 2000 amperes. It can see a fault current equal to 3000 amperes. अब प्लीज यहाँ पर थोड़ा एक समझने की जरूरत है. फॉल्ट यहाँ पर है ऐसे. अब आप बोलोगे सर फॉल्ट यहाँ पर है, इस रिले को तो करंट नजर आएगी नहीं. बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही लंबी है. मतलब इट विल हैव अ लेंथ ऑफ मेनी किलोमीटर्स. रिले जो होता है, इट इज अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट. मे बी इट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. सो इवन इफ यू प्लेस द फॉल्ट लोकेशन somewhat to the right of this जो आपका यहाँ CT है, the level of the current does not change. उसका मतलब ये है कि चूंकि dimensions of the CT plus whatever protective scheme are very small, the current on the bus and somewhat to the right of the bus are approximately the same. Is that clear? इसलिए यहाँ पर ये figure हमने choose किया है. So let us move on. ठीक है. जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग फॉर द डाउनस्ट्रीम रिले. उसके बाद हम क्या नाम है इसका टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला T of A will be T of B plus coordination time interval, which is say 0.5 seconds. Coordination time interval क्यों हम यूज करते हैं? We had seen in the last class. So let us see.
क्या नाम है इसका, वी हैव बिकॉज वी वांट दिस रिले टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल, जो ये वाला अपना रिले है, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड बैकअप फॉर एनी अदर system. We will try to keep the time multiplier setting of this relay as small as possible. In fact, I hope this is visible. Is this visible? Can you see my slides? Hello? Yes, sir. दिखाई दे रहा है? हाँ. So in the last class, we had seen that the time this IDMT relay has characteristics given by this equation. ठीक है? As you can see, time of operation is directly proportional to time multiplier setting. जितना आप टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग कम रखोगे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ करंट, उतना आपके पास टाइम ऑफ ऑपरेशन कम होता है. टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग मे बी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इसका टिपिकल जोन ऑफ वेरिएशन क्या होता है? इट वेरीज फ्रॉम 0.1 टिपिकली टू 1. ठीक है? सो फ्रॉम 10% to 100%. Smallest value is 10%. So because for this relay B, I will take a time multiplier setting of 10%. तो वो इसने किया है. इसने जो आपकी रिले बी है वहां पर देखा है जब इसको मैक्सिमम फॉल्ट करंट नजर आती है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जो हम वहां डीटीओसी रिले में देख रहे थे. आईडीएमटी रिले का थोड़ा वेरिएशन होता है डिजाइन में. वहां पर अगर आपने देखा होगा, वहां पर हम उसमें बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे व्हेन वी क्रिएटेड अ फॉल्ट ऑन बस सी. रीजन इज जो आपका ये डीटीओसी रिले होता है, इसका टाइम ऑफ ऑपरेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ करंट एज लॉन्ग एज यू आर अबव द थ्रेशोल्ड. The same is not true for IDMT relay. It has a very strong dependence on the level of current. So let us see. This is the formula that we have already seen. What I am doing is I have looked at a fault current of 3000 amperes. I have chosen a time multiplier setting of 0.1 and I am trying to calculate the time of operation of relay B. So for that, I have to first of all calculate the plug setting multiplier. ठीक है? सो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज जो आपके पास रिले करंट है IR, उसको आप डिवाइड कर रहे हो बाय प्लग सेटिंग. दैट इज अ प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर. सो इफ यू गो बैक टू Roman 1 point, we have for relay B, we have taken a plug setting of 1 ampere and it's connected to a CT whose turns ratio in fact is 100:1. So plug setting multiplier therefore will be simply, in this case, it will simply be equal to the relay current, because remember the plug setting here is 1 ampere. So anything divided by 1 is the relay current itself. हमारे पास fault current है 3000 amperes and this fault current is flowing into a CT जिसका ratio क्या है? 300:1. ठीक है? Fault current कितना है? It is sorry, it is not 300:1, it is 100:1. I am so sorry. ठीक है? This is 100:1. Fault current is 3000 amperes. हमारे पास एक करंट ट्रांसफॉर्मर है. On the high voltage side, the current is 3000 amperes. On the low current side, what will be the current if the turns ratio is 100:1? कोई कह सकता है? Anyone? 30. Current transformation. हाँ, it will be 30. You have to simply divide by this 100, so that will be 30 amperes. In other words, जब आपके पास ये fault create होती है system के अंदर, this fault here, ठीक है? Bus fault of 3000 amperes on bus B or in the vicinity of bus B, जो आपका ये relay है IB, उसके अंदर current कितनी flow हो रही है? 30 amperes. So from this we can immediately see that plug setting multiplier is equal to 30 in this case. ठीक है? So यहाँ पर वो दिया हुआ है. So because we try to keep the time of operation of relay B as small as possible, because it does not have to coordinate with any other relay, at least not any downstream relay, we have chosen a time multiplier setting of 0.1. ठीक है? So once you put all these values 0.1 and plug setting multiplier of 30 in this equation, you will get a time of operation of around 0.2 seconds. Is that clear? ठीक है? 0.2 seconds में आपका रिले ये ट्रिप हो जाता है when a fault current of 3000 ampere flows on the क्या नाम है इसका line section BC. ठीक है? उसके बाद ये है, इसने ये
अगर आप देखोगे इसने थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज की है, सो दिस इज कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल. Also known as selectivity time interval, जो हमने last class में देखा. He has taken a coordination time interval of 0. seconds, 5 seconds, which is typical. Typically ये लिया जाता है, ठीक है? And so he has calculated for the same fault current, what will be the time of operation of relay B? That has to be 0.7 seconds. Is that clear? Is that clear or not? So, no. In fact, he has sorry. This is not coordination time interval. इसकी थोड़ी terminology different है. This is the coordination time interval. इसने अगर आप देखोगे इसने एक तो पहले सर्किट ब्रेकर वगैरह ओपन टाइम लिया है 0.5 सेकेंड्स. उसके बाद जो आपको मैंने कहा था मार्जिन थोड़ी बहुत हम रखते हैं, इसने मार्जिन यहाँ पर रखा है 10%. तो जब आप सब कुछ ही ऐड करोगे 0.2 प्लस ओपनिंग टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड्स, उसके बाद मार्जिन आप रख रहे हो 10% ऑफ 0.7 सेकेंड्स, दैट इज 0.07 सेकेंड्स. यू विल गेट अ टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले ए इक्वल टू 0.77 seconds. Is that clear? So after that, let's look at this formula again. Remember that all these are IDMT relays. उसका मतलब है ये जो formula है, these are applicable to all these relays. Let us see. In this case, we have been given that time of operation is 0.77. We have to find out what is the time multiplier setting in this case. The first step obviously is, because in this equation there are two unknowns, we have to first of all get the value of this plug setting multiplier. Again, for this system, plug setting is always defined as relay में कितनी current है divided by जो आपका क्या नाम है इसका plug setting है वो किसके बराबर है. So let's see. From Roman 2, we can see that हमारी जो plug setting है relay A की, that is also 1 ampere. So just like in this equation, plug setting will simply be equal to relay current. What is relay current? Remember that the CT ratio for relay A is not 100:1, it is 300:1. So when fault current is 3000 amperes, ठीक है, the relay current will be 3000 divided by 300. ठीक है, हमने high current को divide कर लिया CT ratio से. So if you do that, you will get a figure of 10. So in this case, for a fault current of 3000 amperes, the plug setting multiplier of relay A is 10. So if you plug that in this equation, है ना, you PSM का value भी आपको मिल गया. You simply have to calculate the value of time multiplier setting. Once you do that, plug this in this equation, you will get a time multiplier setting of 0.26. Compare this time multiplier setting to this time multiplier setting, 0.1. It is obviously substantially larger. Is that clear? 0.26. It is substantially larger. So in other words, for the same fault current and for the same plug setting multiplier and all that, we would expect the time of operation of relay A to be slower. अब बोलोगे सर हमको हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि जो time of operation of relay है, it is not constant any longer. So उसमें था जो हमने last class में देखा था DTOC relay में, उसमें ये होता कि अगर हमारे पास relay A है, उसका time of operation फिक्स्ड है. इन कैलकुलेशंस अगर आप करोगे DTOC रिलेज से, उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना मिलता? दैट वुड बी 0.2 सेकेंड्स, जैसे यहां पर देखा हमने. एंड जो रिले बी होता उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन कांस्टेंट होता फॉर एनी करंट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.77 seconds. That is no longer true here. Here the time of operation is a strong function of the current level because this formula is true. ठीक है, so let us see that. जरा रिले कहाँ गया? ये रिले ए की बात मैं करता हूं. अगर आप रिले ए को देखोगे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फॉल्ट्स इन द लाइन सेक्शन ए बी. इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग बैकअप प्रोटेक्शन फॉर ऑल द फॉल्ट्स इन लाइन सेक्शन बी सी. What is the maximum fault current that is seen by this relay B? That is obviously the maximum fault that can flow for any fault location in line section AB. So if you look at one end of this line section B, the fault currents can vary from 2000 to 3000 amperes. अगर आप देखोगे ये जो 3000 ampere वाला है, इससे हमने ये derivations की. On the other hand, if you look at bus A, fault currents can vary from 3500 to 4000.
Let us see what is the time of operation of this relay for a fault current of 4000 amperes. By the way, this calculation was not necessary in the case of a DTOC relay because time of operation there is independent of fault current, that would be 0.77 seconds regardless of current kya hoti. Let us try to do that here. How do we do that? It's again, let's use the formula. Time of operation is equal to time multiplier setting into 0.14 divided by plug setting multiplier raised to power 0.02 minus 1. Hopefully आप में से किसी के पास कैलसी होगा, ठीक है? So in order to find out time of operation, I have to first of all calculate the time multiplying setting. I have to also find out the value of the plug setting multiplier. I have already calculated the value of time multiplier setting for relay A. कहाँ गया relay A? Yeah, it is 0.26. ठीक है? So I will write for relay A, time multiplier setting is something which is known to me. That is 26%, 0.26. How do we calculate plug setting multiplier? Plug setting multiplier is given by this equation. It is equal to relay current, that is to say the current flowing on the secondary side of the CT divided by the plug setting of the relay. In this case, plug setting is 1 ampere as we have seen. So plug setting multiplier will simply be relay current. Okay? So what is the fault that we are simulating? Fault is 4000 amperes. Okay? Which is the maximum fault that this relay here can see. And what is the current transformation ratio of the corresponding CT? It is 300:1. So if you look at a fault current of, let me write it somewhere here. Fault current हमारे पास है 4000 amperes. ठीक है, 4K. We have a CT ratio of 300:1. In other words, a primary current of 300 amperes produces a secondary current of 1 amperes. Primary current of 4000 will produce a secondary current of obviously 4000 divided by 300. कितना है ये? If you cancel out these 3 zeros, this is around 13.33. ठीक है? So this is the plug setting multiplier, 13.33. So can anyone find out using a calci what is the time of operation here? You have to basically numerator में आपको लिखना है 0.26 into 0.14 and denominator में आपको क्या लिखना है? Plug setting multiplier. लिखा आपने, very good. So this is 0.684. ठीक है? Please keep that in mind क्योंकि I will basically draw this. So we had a fault current of 4000 amperes. कितना आपने बोला टाइम ऑपरेशन कितना है? 0.684. Okay, so let's take 0.68. ठीक है? This was the time of operation 0.68. For the same relay, when the fault current was 3000 amperes, we had calculated time of operation is 0.77. So it is around 0.1 seconds faster. So अगर यहाँ पर 4000 है, maybe 3000 यहाँ पर है कहीं पर. ठीक है? Time of operation is somewhere here. It is 0.77. तो अगर आप देखते हो, as you increase the fault current, the time of operation falls. जो हम expect करेंगे, क्योंकि ये characteristic कैसा होगा? It will be like this. Is that clear? Is that clear or not? ठीक है? So basically what we have done is we have by replacing DTOC relays by IDMT relays, we were first of all able to get coordination between the different kinds of relays, exactly like the way we did for DTOC relays. But in addition to that, we also got a desirable property that for every relay, as the fault current through that relay increases, the time of operation of that relay decreases. Is that clear? So ये थोड़ा फायदा हमको मिल गया एक किस्म से. Any questions? कोई question है?
सर हम लोएस्ट फॉल्ट करंट क्यों नहीं यूज किया हमने ऊपर, हम क्यों कर रहे हैं 3000 वाली करंट यूज जो मैक्सिमम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने बोला। आप इसकी बात करो, लेट मी गो बैक टू दिस। आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल हमने क्यों नहीं 1000 एम्पियर या 2000 एम्पियर या समथिंग यूज किया, इज दैट योर क्वेश्चन? जी सर, क्योंकि लोएस्ट करंट भी दिखनी चाहिए ना रिले को, जैसे आपने कल बताया था। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखो इसमें क्या है, मतलब आई विल गिव यू अ फिजिकल आंसर एंड यू कैन कंफर्म दैट न्यूमेरिकली एज वेल। हमारा बेसिक एम क्या है? हमारा बेसिक एम है ये जो हमारा रिले है ना बी, ये ऑपरेट होना चाहिए उसके कम से कम वो जो सिलेक्टिविटी टाइम इंटरवल है ना, उसके बाद कौन सा रिले आपका ऑपरेट होना चाहिए? ए। In other words, this equation must always be true. Time of operation of relay for any current is should be given by this. It is greater than or equal to TB plus selectivity time interval. Is this clear? Hello? यस Is सर। this clear? यस सर। For me? Hello? आवाज ब्रेक हो रही है सर। इट्स हाँ, हेलो सर, यू आर नॉट not ऑडिबल। able to understand. You can hear me. Can you hear me? Hello? सर I यू am आर not नॉट audible. ऑडिबल। Uh, Okay, एक second. Let me try to present my screen again. I'm so sorry. There is some issue with the internet here. Faizan, can you see this? The other guys, can you see my screen? Screen नजर आ रहा है? यस सर। Hello? Okay. So please आप मुझे interrupt कर लेना अगर कोई मतलब issue होगा ऑडियो या वगैरह में। So question ये है कि हमारे पास जो ये है ना मतलब रिले A and रिले B, time of operation of relay is greater than or equal to time of operation of relay B plus some coordination time interval. ठीक है? As long as this equation is true, for any fault anywhere between bus B and bus C, relay B will get an opportunity to trip before relay A. Is that clear? Hello? यस सर। यस सर। हाँ। अब अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास लाइन सेक्शन BC है, we obviously have two extremes here. We will get the minimum fault current on bus C. We will get the maximum fault current on bus B. Is that clear? Yes, Even sir. for any bus, यहाँ पर अगर आप देखोगे, I have basically given a realistic situation here. Fault currents at any location are not constant. They basically depend upon, for example, what is this impedance here? जो हमारी generator side की impedance है ना? Now, as you connect and disconnect generators here, this impedance can go up, this impedance can go down, and hence the fault currents at the same location in a system can go up and down. Based on historical data and all that, you have been given with this scenario, presented with this scenario where the fault currents at any location, or at least the bus locations, lie between some minimum and some maximum value. So if you look at bus C, the fault current lies between 1000 and 1500. At bus B, the fault current lies between 2K and 3K. Is that clear? Now, think about this. For an IDMT relay, this is the characteristic. Hello, can you see this? Yes, sir. Yes, sir. As fault current increases, what happens to time of operation? Decreases. Decreases. Shabash. So, if you look at this relay, remember this relay has to coordinate with this relay. Let us assume हमने जो डिजाइन किया था ना, हमने पहले क्या निकाला? हमने टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले निकाला फॉर अ फॉल्ट करंट ऑफ 3000 एम्पियर्स। उसके बाद हमने टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले ए निकाला फॉर अ फॉल्ट करंट ऑफ कितना? 3000 एम्पियर्स। फिर उससे हमने वो टाइम वगैरह मल्टीप्लायर निकाला। Let's assume we had calculated this for any other fault current in the zone BC. The maximum fault current is 3000 amperes. If you take any other fault current, आप ही बोलो कौन सी fault current ले जो अभी आपको खुशी होगी? बस सी पे मिनिमम फॉल्ट करंट अगर हम लेंगे। बस सी पे? जी सर, 1000 बस सी पे एम्पियर। लेट्स अज्यूम 1000 एम्पियर मैं ले लेता हूँ, ठीक है?
मैंने सेम कैलकुलेशन परफॉर्म की फॉर अ फॉल्ट करंट ऑफ 1000 एम्पियर। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लगाई, टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले बी प्लस कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल। इज दैट क्लियर? जी अगर अब फॉल्ट करंट मेरी आ गई 3000 एम्पियर्स, व्हाट विल हैपन? टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले बी विल डिक्रीज, है ना, जी बिकॉज सर आईडीएमटी रिले है। टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले ए विल आल्सो डिक्रीज, जी सर ठीक है। बट रिमेंबर यहाँ पर जो हमारे पास सीटी रेशियोज हैं, दोज आर डिफरेंट. So the relative decrease of relay A and the relative decrease of relay B may be mismatched. If they are mismatched, it may so happen, if they do not decrease by the same proportion, that this formula is no longer valid. In fact, we have some time, let us do that. ठीक है, हम ये फॉर्मूला रिपीट करेंगे, सॉरी ये डेरिवेशन रिपीट करेंगे जो आपने कहा ना 1000 एम्पियर्स पे क्या होगा. इज दैट क्लियर? जी सर ठीक है. यहाँ आप देखो, लेट्स अज्यूम we will have to go for a long fledged discussion, but anyway physically मैं आपको फिर से समझा देता हूँ. If you start with a small fault current, ठीक है, then you use this equation TA is equal to TB plus coordination time interval. These two relays will be coordinated for that small fault current. Is that clear? But as the fault current of this line section BC increases, this coordination is typically lost. On the other hand, अगर आप worst possible scenario का मतलब है ये relay B सबसे fastest operate करेगा when fault current is 3000 amperes because it's an IDMT relay. अगर वहां पर आपने इन दोनों को coordinate किया when situation is most critical, when the time of operation of this relay is very fast, then they are automatically coordinated for less critical cases जहां पर time of operation of relay B थोड़ा slower है because fault current is slower. Does that answer your question? सर ऐसे तो समझ आ गया बट ओके हम इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है. सो फॉर एग्जांपल देखो, अब आपको थोड़ा शुबा है ना कि चलो 3000 पे तो कोऑर्डिनेट हो गया, 2000 पे कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं, 1000 पे कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं. कोऑर्डिनेट का मतलब यह है इफ देयर इज अ फॉल्ट करंट ऑफ 2000 हियर, ठीक है, रिले ए मेरा ऑपरेट होना चाहिए और जो रिले बी है ना, सॉरी रिले बी पहले ऑपरेट होना चाहिए और रिले ए का ऑपरेशन टाइम होना चाहिए कम से कम इक्वल टू टीबी प्लस कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल. इज दैट क्लियर? यस Hello? सर So let us look at the example that he has given. Okay. देखो यहाँ इसने सिमुलेट किया है, अभी तक इसने डिजाइन वगैरह करके दिया आपको टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग. अब इसने बोला है कि अगर आपके पास बस बी पे है 2000 एम्पियर्स फॉल्ट करंट, ठीक है. इज दैट क्लियर? जो आपका रिले बी है उसकी जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है दैट विल बी 2000 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज रिले बी का सीटी क्या है 100:1. So it has a plug setting multiplier of 20. For relay B हमने at the start of design लिया था time multiplier setting of 10%. So if you want to find out operating time of relay B, first of all, because fault current is less than 3000 ampere, time of operation will be smaller than the time of operation that we had seen for fault of 3000 amperes. But anyway, let's see. Look here. I've plugged this data, time multiplier setting of 0.1, plug setting multiplier of 20 into this formula, and I was able to find out the time of operation of relay B for a fault current of only 2000 amperes. You can compare that to this value 0.2. अगर आप देखोगे this is 0.2 and this value here is 0.226. It is greater than 0.2. Why is it greater than 0.2? Because this is an IDMT relay. For a smaller fault, time of operation is greater. ठीक है, ठीक है. अब हम यहां पर देखते हैं, यहां आप देख लो हमारे पास फॉल्ट करंट है 2000 एम्पियर. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले ए हियर. इट शुड बी एटलीस्ट हमने कितना लिया था सिलेक्टिविटी टाइम इंटरवल, इट वाज 0.57. सो लेट्स अज्यूम हमने लिया था 0.6, कम से कम 0.6 सेकंड स्लोवर होना चाहिए कंपेयर टू रिले बी. So let us look at this equation. First of all, fault current is 2000. ठीक है, we have a CT ratio of 300:1. So plug setting multiplier is 6.66. We have calculated TMS is equal to 0.26 here. ठीक है. So if you plug this data into this formula for IDMT relay, you will get a time of operation equal to 0.94.
तो ये है 0.94 सेकेंड। आपको मिनिमम टाइम फॉर ऑपरेशन कितना होना चाहिए था? दैट शुड बी 0.226 प्लस कितना, अराउंड 0.6, that will be 0.826 if I'm not mistaken. You are getting a time for operation which is greater than 0.826. In other words, if such a fault happens, relay B will trip before relay A. Is that clear? You can repeat this calculation for all smaller values of faults. Again, I am trying to give the physical justification for this. For the worst possible fault on line section BC, relay B will trip the fastest because it will trip at a very fast rate, at a very fast speed, in a very small time interval. Coordination, if you coordinate the time of operation of relay A and relay B for that worst case scenario, the other scenarios which are much less drastic, where the relay B time of operation is much slower, they are automatically coordinated. Is that clear, Faizan? Yes, sir. Hello? ठीक है. So anyway, hopefully ये आपको आ गया समझ. So you can see that this is a very simple procedure. आप कैसे ये कैलकुलेट करते हो? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. आप जाओगे पहले डाउनस्ट्रीम रिले में, उसके बाद आप सीक्वेंशियली ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हो. Is that clear? So we have the next topic which is choice between IDMT and DTOC relays. Anyway, अगर आप ये देखोगे, ये जो सारी कैलकुलेशंस हमने की थी ना आईडीएमटी रिले की, उसमें हमारे पास डिफरेंट फॉल्ट करंट्स मिल रही थी. ओके, as you move from bus A to bus C, the fault current can vary from 4000 amperes, which is the peak value, to 1000 amperes, which is the smallest value. Is that clear? Is that clear or not? बट देर आर मेनी सिचुएशंस, चूंकि हमारे पास फॉल्ट करंट वगैरह बहुत वैरी हो रही है, उसके लिए हम ये आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे हैं. आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा, हम ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक दैट एज द करंट लेवल इंक्रीजेस, टाइम ऑफ ऑपरेशन डिक्रीजेस. But there are many scenarios where the fault current does not vary appreciably from bus A to bus C. मतलब अगर यहाँ पर the fault current here will be say 2800 amperes, which is a very small variation of less than only around 6 or 7%. वैसे कैसे situations होती हैं? Let me draw a simple diagram. First of all, I hope this is visible. Can you see this Jamboard? Hello, is this visible? Yes, sir. ठीक है. So we have a situation like this. We have a system in which the generator has a very large reactance, compared to which the reactances of these line sections are very small. ठीक है. So on a per unit basis, let's assume that again this is 1 at an angle of 0 degree. अगर हमको fault analysis करना होता है, let's assume that this reactance is 1 per unit. ठीक है. Actually 1 per unit is very large. Let's assume this reactance is say 0.1 per unit. And ये जो हमारी reactances हैं, this is 0.01, this is 0.01. ठीक है. Let us see what will happen if there is a fault current here. अगर यहाँ पर fault current है, can anyone tell me यहाँ पर कितनी current flow हो रही है? What is the level of fault here? If I create a fault at, this is A, this is B, this is C, this is IFA. कोई मुझे कह सकता है यहाँ पर कितनी fault current flow हो रही है? Anyone? 10 per unit. है ना? Because I am basically simple क्या है हमारे पास system? I am looking at the voltage, I am dividing by reactance, simple Ohm's law. So this will be 10 per unit. ठीक है. Let's look at another scenario where instead of the fault being located here, the fault is located at bus B. What is the fault current here? Anyone? First of all, fault को कितनी reactance नजर आ रही है? 0.11. What is खाली कहाँ 0.11? 0.1 भी तो है. 0.11 है ना? देखो ये हाँ 0.11, या you are right. So देखो फैजान क्या कह रहा है यहाँ पर, फॉल्ट करंट आपकी निकलती है यहाँ से जनरेटर से, उसको पहले रिएक्टेंस नजर आती है 0.1, फिर 0.01, फिर यहाँ जा रही है. ठीक है. सो एनीवन कैन, कोई मुझे कह सकता है 1 डिवाइडेड बाय 0.11 आपको करना है. हाउ लार्ज इज दिस? व्हाट इज IFB?
कोई तो बोलो 1 divided by 0.11. Does anyone have a calci? 9.09. 9.09. Are you sure of that? I don't think इतना drastic होगा. Wait a second. Okay. So 9.019, I will keep that 9.1. Is that clear? What will happen if I create a fault current here? First of all, उसको reactance कितनी नजर आती है? It will see a reactance of 0.1. It will see a reactance of 0.01. It will also see a reactance of 0.01. So इसको कितनी net reactance नजर आ रही है? 0.12 है ना? So कितना है ये react current? 8.33. So I will say 8.4 approximately. So as you can see, you please compare this scenario to that scenario. As you move from this point to this point, the fault current changes, no doubt, but the change is very small, maybe 9% or something. On the other hand, this problem that we had encountered, fault current changes by an enormous amount. So if you look at say maximum fault current on bus A, it is 4,000 amperes. Maximum fault current on bus B is 3,000 amperes. So that is a variation of 25%. And in particular, if you look at the minimum current, 4,000 to 2,000, that is a variation of 50%. Okay, 50% of 4,000 is 2,000. Okay? Here, fault current changes, no doubt, but the variation of fault current with respect to position is the variation is very weak. Is that clear? In such a case, चूंकि हमारे पास IDMT रिले ऐसा है, आपने इस करंट पे इतना टाइम ऑफ ऑपरेशन है, अगर आप थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट जाओगे ना, there is hardly any change in time of operation. So effectively, even the IDMT relay behaves like a DTOC relay. Did you understand this? हमारे पास IDMT relay हम इस्तेमाल कर रहे थे because there is a strong dependence of time of operation of relay on the level of current. If the level of current hardly changes or changes by a very small amount as one moves from one point to the other point, ठीक है, the time of operation changes by a very small amount, and therefore effectively this is also a DTOC relay. अगर आप देखोगे in the vicinity of a current from this point to this point, ठीक है, time of operation changes by a very small amount, so it is approximately constant. ये भी behave करता है like a DTOC relay. In other words, जो हमारे पास ऐसे feeders होते हैं, वहां पर हमारे पास IDMT relay यूज करने का कोई point ही नहीं है. So for such feeders, for such systems, we typically use DTOC relays, जो हमने last class में देखा था. ठीक है, इसको हम कहते हैं these feeders are known as electrically short in length. Electrically short, not physically short. Electrically short का मतलब यह है कि the dependence of fault current on the length of the feeder is very weak. Is that clear? ठीक है. अब आप बोलोगे सर DTOC रिले यूज क्यों करेंगे? मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, जो DTOC रिले होता है उसमें हमारे पास रैपिड सैचुरेशन होती है. IDMT रिले में हमारे पास डिलेड सैचुरेशन होती है. डिलेड सैचुरेशन के लिए हमें IDMT रिले का कोर साइज इंक्रीज करना पड़ता है. क्योंकि हम कोर साइज इंक्रीज करते हैं, उसका कॉस्ट, वेट, everything increase हो जाता है. In other words, if you look at the same application, at least classically, DTOC relays are typically much cheaper compared to IDMT relays. By the way, this is no longer true nowadays. Nowadays, all the relays are basically implemented in software. वो गया जमाना ये electrical का, वो iron कोई हिल रहा होता है. So this thing is no longer true. But still today you will find many systems which are using legacy system, legacy relays. तो वहां पर आप देखोगे जो short आपके feeder होते हैं, वहां पर हम DTOC relays use करेंगे. Again, short का मतलब है this reactance here, as we have seen, is very small compared to this reactance, जो transmission reactance है. वो कब हो सकता है? हो सकता है कि जो आपके generators हैं, they are located far away from your point of coupling, जहां पर loads आपकी connected हैं. Because remember, this reactance is directly proportional to length. जितनी आपकी
जनरेटर दूर होगा, generators in fact I will use the word generators, there is not a single generator in the system, there are multiple generators, जिसका आप ये Thevenin equivalent यहाँ बना रहे हो। जितने वो आपके लोड सेंटर से दूर होंगे उतना आपके पास ये इशू होगा कि that fault current hardly varies as you go inside the feeder. Is that clear? Is that clear or not? Hello? Hi, hopefully I'm still connected. Faizan, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have the final topic and then you can leave. This is protection of a three-phase feeder. Actually, how do we protect a three-phase feeder? I will just, first of all, let's look at the kind of faults that typically can be seen. So we have three kinds of single phase to ground faults. हमको A to G fault हो सकता है, B to G fault हो सकता है, C to D fault हो सकता है। हमारे पास तीन टाइप के फेस टू फेस fault हो सकते हैं, A to B, B to C, C to A. Then we can have three kinds of double line to ground faults. We can have ABG, BCG, CAG. ठीक है? And finally we can have a three phase fault और हमारे पास थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कितने टाइप ऑफ फॉल्ट्स हो गए? 3 + 3 + 3 that is 9, 9 + 2 is equal to 11. In a practical system, we have to design our systems for protecting against three kinds of faults. Is that clear? So यहाँ पर आप देखो, look at this system. यहाँ पर अगर हमारे पास this is phase A, single line to ground fault आ गया phase A में, ये जो आपके बाकी दो सीटीज हैं उनमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि लोड मेरे पास, जब आपको याद होगा फॉल्ट करंट कैलकुलेशन में हम अज्यूम करते हैं इनिशियली सिस्टम आपका अनलोडेड है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दीज टू सीटीज, द करंट हियर ऑन द प्राइमरी साइड इज 0 and 0. If current on the primary side is 0, automatically current on the secondary side is 0. So this current is 0. This current is also 0 on the secondary side. मैं क्या यहाँ यूज कर रहा हूँ? N1 I1 is N2 I2. If I1 is 0, I2 automatically is 0. ठीक है। So on the other hand, there is a fault current that is present here on the क्या नाम है इसका, phase A fault, phase A sorry, phase A का अगर turns ratio है C, तो यहाँ पर fault current को आप divide करो by N से, that will be the current that is circulating on the secondary side of this relay, secondary side of this CT. वो current यहाँ जा रही है इस relay के अंदर, and then it is flowing into ground. Is that clear? अगर वो फ्लो हो रही है ग्राउंड में, उसमें अगर आप देख सकते हो जो हमारे पास ये सर्किट ब्रेकर है, जो क्रॉस हमने बनाया ना, प्रैक्टिकली वी डोंट हैव अ सिंगल फेज सर्किट ब्रेकर, वी ऑलवेज हैव थ्री फेज सर्किट ब्रेकर्स इन आवर सिस्टम, बिकॉज हमारे पास थ्री फेज ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह वगैरह होता है। उसके हमारे पास ये कॉन्टैक्ट्स हैं, वी हैव कनेक्टेड देम इन पैरेलल। ये जो वही जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, जब ये रिले में करंट फ्लो होती है, वो अपने कांटेक्ट, ए का कांटेक्ट ये है ए, इसको ये क्लोज करता है, ये क्लोज करता है, तो यहाँ पर करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है तो आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे अगर आपके पास खाली फॉल्ट होता फेज बी में, फेज बी टू ग्राउंड, खाली आपका रिले बी ऑपरेट होता। अगर खाली आपके पास फेज सी में होता फॉल्ट, तो खाली रिले सी होता ऑपरेट, बट इन ऑल केसेस बिकॉज यू हैव कनेक्टेड द कॉन्टैक्ट्स इन पैरेलल, सर्किट ब्रेकर गेट्स ट्रिप्ड। Is that clear? Then we have some more complicated kinds of faults. We have AB fault, for example. As you can see, for A खाली A trip हो रहा है, B खाली B. Sent the link. Sorry? Sir, class start हो गई इखलाक सर की। हाँ, just give me 1 minute. ठीक है? अब मुझे हो गया ना डिस्कनेक्ट। B C जब आपके पास होता है, A B and C get actuated. And similarly, you can see different kinds of actuations for yourself. Final thing, and then you can leave. मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने आपको कहा था टिपिकली ग्राउंड फॉल्ट करंट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू फेज फॉल्ट करंट। कैन एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? वी हैड सीन दैट व्हेन वी वर डिस्कसिंग सीक्वेंस नेटवर्क्स। एनीवन? अरे वहां मैंने बोला था ना, ग्राउंड फॉल्ट करंट खासतौर पे डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे बहुत कम होती है कंपेयर टू फेज करंट, फेज फॉल्ट करंट है। द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आपको याद होगा, जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उनकी जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे बिटवीन जनरेटर एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन फीडर बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनकी जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस हावी है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप फॉल्ट करंट निकालोगे ना, एनी फॉल्ट व्हिच इन्वॉल्व्स ग्राउंड, से A to G और AB to G, दैट विल बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू से ओनली AB और खाली क्या नाम है ABC। इसलिए टिपिकली हम ऐसा सिस्टम यूज करते हैं। हमने ये फेज ए है, ये फेज सी है,
उसके रिलेज हमने सीटी के सेकेंडरी में लगा के रखे हैं, लेकिन जो हमने फेज बी है उसका सेकेंडरी साइड ओपन रखा है। इंस्टेड हमने एक ग्राउंड फॉल्ट रिले लगा के रखा है विच इज कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट टू ग्राउंड। दिस ग्राउंड फॉल्ट रिले हैज अ वेरी स्मॉल पिकअप लेवल, इसका पिकअप लेवल बहुत स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल पिकअप लेवल का मतलब होता है बिकॉज फॉल्ट करंट्स ऑन विच इंक्लूड ग्राउंड आर वेरी स्मॉल, this small pickup current allows a decent operation of this ground fault relay as well, ठीक है। now you can leave, please join a clock service class, ठीक है। thank you so much, okay, let me stop the recording।